Good morning. Today I am back with another video. Today my video is about paint protection for my pre-owned Honda City. There has been lot of questions from my viewers that when I am going to detail my Honda City, why I didn't do this, because the car needed a absolute paint correction. I'll go for a detailing work, but before detailing work it needs some paint correction. So those two guys have come who will do the paint correction work today, and you can see why paint correction is necessary. There is so much of dust that has accumulated around the car body since the car has no protection. अभी कोई गाड़ी में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसीलिए ऐसा ही धूल मैल सब गाड़ी के ऊपर स्टिक हो गया, ये देख सकते हैं। तो उसके डिटेलिंग या सेरामिक या ग्राफीन जो भी आप कीजिए, उसके पहले आपको पेंट करेक्शन करना ज़रूरी है. सो वी आर गोइंग फॉर अ पेंट करेक्शन प्रोसेस. सो बिफोर दिस पेंट करेक्शन प्रोसेस, द फर्स्ट job will be to wash the car. Here in this type of situation you can't go for a dry duster, as there will be chances of scratches since the car is not protected. So let us first wash the car. पहले गाड़ी को धुलाई कर लेते हैं. Now the job will be to wet sand the entire car, as the surface is very rough. So the first job will be to smoothen the surface. I have already shown you this particular procedure in my Ford Fiesta Classic previously. So they will wet sand the entire car to smoothen the entire surface. Why this was necessary? Because the car went for a paint correction. Some of the areas were not properly painted, so the dealer offered a free paint correction job. So some of the panels has been repainted again. So those particular areas needs proper wet sanding, and while repainting those surfaces there were some paint overspray. So this is very much necessary. এই হেডলাইটের কাঁচগুলো ভালো করে করে দেবে, তো একদম সেই দাগগুলো রয়ে গেছে, ল্যাকার ফ্যাকারের ইয়েগুলো পুরো রয়ে গেছে. So why this process is required, I am telling you, there has been lot of questions that whether I can apply directly ceramic or graphene, but if your car is full of swirl marks and scratches, this particular procedure is necessary. गाड़ी में ज़्यादा स्क्रैचेस है तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना पड़ेगा वो स्क्रैचेस हटाने के लिए, तो इसलिए ये प्रोसीड्यूर इज़ मस्ट. So you can see the entire body has been wet sanded, and it has lost all the shine and everything. It is looking absolutely matte now, absolute matte. All the entire car has become matte at this moment. Now with the help of an wool pad, they will be polishing this car. There is a
Now you can see the paint correction job is over. In fact, we were supposed to do this job yesterday, but we couldn't do it as it was raining throughout the day and it became dark, so we abandoned the idea of detailing. Today we will detail the car. Now you see the paint is absolutely corrected. There are no scratches, no swirl marks, and this is a perfect paint for your detailing job or paint protection. And for this protection I will use a graphene coating. You can use ceramic also, you can use ceramic hybrid, you can use graphene, whatever you like, but you must go for a good paint protection to make your paint long lasting. तो आपको पेंट प्रोटेक्शन अगर करनी है तो पहले पेंट को करेक्ट कर लीजिए. अगर आपका कार में स्क्रैचेस और स्वेल मार्क्स है उसको हटा लीजिए. उसके लिए आपको मशीन पॉलिशिंग का ज़रूरी है. यू नीड अ मशीन पॉलिशिंग, एंड मशीन पॉलिशिंग हम खुद नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम हायर किया था 2 आदमी जो आके पूरा कार को पेंट करेक्शन कर दिया. सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. वील डू 1 panel at a time. We'll clean this panel with the help of moist damp cloth since the car is outside. Also this is an example for those who are keeping their car outside in an open area. We are preparing the moist damp cloth for removing any loose dust or anything like that. Since the car has been polished yesterday, so no shampooing is necessary. হ্যাঁ, জাস্ট একটা একটা করে, বেশি চাপ দিয়ে না, এর ওপর ধুলো আছে, হ্যাঁ হালকা করে, very gently as there may be dusts, so you have to be careful. Don't be in a hurry. ज़्यादा हड़बड़ी नहीं कीजिए, नहीं तो फिर स्क्रैचेस आ जाएगा क्योंकि धूल मैल गाड़ी के ऊपर आ गया. Surface is ready for application of your coating or paint sealant, whatever you are going to use. And most favored product is this particular Turtleworks Graphene Hybrid Flex Wax. So I particular sealant for perfect paint protection. The advantage of using this particular product is that you need to apply it once and curing time is very less. The particular process I am showing you is your foundation or base coat. So I will be using this particular product as foundation coat or base coat. So advantage will be in the upcoming top coat you can either use graphene, you can use ceramic, anything you can use above this. Another damp cloth I will keep as handy so no streaks are formed. You have to be careful while applying this type of products. If you apply too much there will be a problem of streaking. So this is the damp cloth that I will keep at one side. Another one for spreading the product, and this particular one for applying this flex wax. So let's start the project. Shake well properly before you use this. Apply 2 to 3. So you can see this particular area I have applied this particular graphene coating. So you can see the slickness and how glossy it has become. So let me complete the entire bonnet and I will show you how it looks. I recommend to spray you directly on the panel, but I will tell you it's better to apply on your applicator pad, which is a better process. आप ऐसे ही एक पैड खरीद लीजिए. इसका सेट आपको
अमेज़न में मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। एंड अप्लाई इन क्रिस क्रॉस मोशन, सो नो एरिया इज़ लेफ्ट आउट। ज़्यादा आप मत लगाइए, ज़्यादा लगाने से आपको स्ट्रिक्स फॉर्मेशन आ जाएगा। अगर आप और भी ग्राफीन एप्लीकेशन देखना चाहते हैं, मेरा दूसरा वीडियोस भी है, वो भी आप देख सकते हैं। नाउ आई विल अप्लाई द डैम्प क्लॉथ। ऐसा डैम्प क्लॉथ देने से एडवांटेज इज़ दैट स्ट्रिक्स फॉर्मेशन आपका नहीं होगा और ग्राफीन अच्छा से स्प्रेड करेगा। Use 2 to 3 or 4 microfiber cloths handy to do this particular process। आप 2-3 सेट का माइक्रोफाइबर क्लॉथ खरीद लीजिए। पॉलिशिंग के लिए पतला वाला लीजिएगा और स्प्रेडिंग के लिए थोड़ा मोटा वाला। एंटायर बोनेट हैज़ बीन फिनिश्ड। आप देख ही सकते हैं बोनेट में कैसा ग्लॉस आ गया पूरा बोनेट में। अगर वी डिफरेंशिएट दिस टू पैनल्स तो ये वाला पैनल पूरा हो गया। तो ऐसे ही हम पूरा कार को कंप्लीट करेंगे। लाइक दिस आई विल कंप्लीट द एंटायर कार एंड आई विल शो यू व्हाट इज़ द रिजल्ट। अच्छा चल, पूरा कार को पोंछ लेंगे, बहुत हल्की सी, क्योंकि नहीं तो स्क्रैचेस आ जाने का चांस है। There will be chances of scratches, so you have to do it in very gentle strokes। So this area is ready। Now same process। ए पास থেকে শুরু করো। Always do one panel at a time। रिमेंबर, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है, क्या हमको ग्राफीन लगाने के बाद पॉलिश करना है? नहीं भैया, एक्चुअली पॉलिश क्या होता है? पॉलिश इज़ एक्चुअली करेक्टिंग योर पेंट। पॉलिश कोई प्रोटेक्शन लेयर नहीं है। तो पहले आपको पॉलिश करना ज़रूरी है। अगर आपका पेंट का कंडीशन ख़राब है, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, या आपका कार में काफ़ी स्क्रैचेस और स्वेल मार्क्स है, तो आपको ज़रूर, हाँ ना उठाओ नहीं तो पड़ो, हाँ उठाओ नहीं तो पड़ो। और जब आप ये काम करना है, आपको 2-3 माइक्रोफाइबर क्लॉथ एक साथ रखना है, क्योंकि एक गीला हो जाएगा तो दूसरा यूज़ कीजिए। Applying this product is very simple। Only thing you have to remember, you need a clean surface without any scratches। Depending upon your panel size, you choose how much you need to। Normally 2 is more than enough। If the panel is of bigger size, you can go to 3। Here I am using 2 to 3 because the panels are bigger than my other car। ग्राफीन कोटिंग का एक ही एडवांटेज है। ग्राफीन कोटिंग का एडवांटेज इज़ दैट यू नीड टू अप्लाई इट वंस, यू डोंट नीड 2 coats, and curing time is much less than ceramic coating। You can easily find how the gloss and mirror like finish is coming up। तो एक बात ध्यान रखना है कि अगर हमको मिरर टाइप ऑफ फिनिश चाहिए, ऑक्सीडाइज्ड पेंट में नहीं होगा। उसको पेंट करेक्ट करके फिर अप्लाई करना है।
Finally the entire job has been completed, and you can see the gloss has been restored, and this has been done with paint correction, and the car absolutely looks like a new showroom finish. And you can see the level of slickness. You can see the level of slickness, absolutely not a single surface is rough, and the entire car looks absolutely new. Nobody will tell you it's an old car other than the model, since it is a 2016 model. Otherwise everything has been restored to perfection. So in this way, whenever you buy a used car, you should do a paint correction and finally apply a graphene or a protective coating to give it a long lasting shine and finish. So if you have liked the video, and if you think this video is useful to you, please do subscribe and give a like or a thumbs up. Thank you very much, and goodbye.